Hello, hello, hello. Good afternoon. All right, can you please let me know if my voice is audible? Okay, okay. It's good. It's good, I guess. All right. So, if you remember, this is the exact area from where I told that this is liquidity and prices will bounce off from this area. Prices moved, and we all can see that, but we have not really capitalized because it was not really in the session, but still from that area like we got almost 300 points ka move, 300 pips ka move. Now what I'm seeing is I am actually expecting it to retrace down lower within some discounted area, maybe something within this, and then from here we can actually expect a continuation move in the upward direction. From here I would not be interested in entering longs. Even if it push up higher, I'm fine with just leaving it as it is. So these are the two expectations from my end. Like if prices retrace to the discounted area, we would actually look for longs. In fact, like even liquidation of this dipping down lower and from here some aggressive reaction with some confirmation, I am in, I'm sold. Euro USD, I actually wanted to push down lower slightly more. The way it's building up, the way it's moving, looks like there's a chance कि buyers जल्दी आ सकते हैं. Right now it's very slow, but after some push down lower, we'll see how it reacts from here. Ideally, मुझे तो चाहिए कि ये और थोड़ा नहीं काफ़ी नीचे आए, but still we have this previous high pending in daily time frame. This high is supposed to go and it's still pending, so there's a chance that ऐसे ही प्राइस भाग जाए. बट अगर नीचे आए तो पक्का. भाई क्या जनवरी का महीना सेक्सी रहा. Like still we have one more week, but it was a solid month with the trade that we have updated in the group. Amazing. Gold looks like it's trying to push down low. और US 100 में मेरा अभी फिलहाल के लिए कोई इंटरेस्ट बन नहीं रहा. और it's way too high up in the premium and I don't have any intentions as such. इसमें भी मेरा ये था कि अगर प्राइसेस ये लेवल पे आए, आई प्लेस्ड अलर्ट एज वेल, तो आई विल बी लुकिंग फॉर लॉन्ग्स, बट प्राइस फेल टू रीच दैट. Maybe nearer future prices will, so I'll be waiting for that. Let's stick to gold. Gold में हम वेट कर रहे हैं. ये हाई तो पक्का जाएगा, ये हाई भी पक्का जाएगा, but all we are waiting for is some retracement. I don't know why there are these many lines. Let's get rid of all this. Yeah. This also looks good only, so it does make sense कि हम एक्सपेक्ट करेंगे अब यहाँ से प्राइजेस तो चले जाएगी. बाकी देखते हैं. Okay. Yeah, this area does make sense. I would like to see a prices pushing down lower within this and then pushing up higher again. So I'll be waiting patiently.
Hmm. Right now, we are waiting for just this area. We'll be looking for longs from this. It has swept some internal range liquidity. Some liquidity has been taken out. भाई मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा नीचे आ जाए ना मजे आ जाएंगे because I'm not seeing this low to be taken out. Or I am not really willing to invest this high up in the premium because discounted area यहाँ का ही है. अगर मुझे यहाँ का ही prices मिलती है so I would still continue to look for longs because this area looks really nice to me. And yeah, this area looks really nice to me, so planning to execute. You got a new? No, bro. This is the same. ऐसे कुछ नहीं है भाई. पुराना माइक ही है. I am thinking to upgrade with that वो वायरलेस वाला माइक होता है ना और कंटेंट के लिए. But I have some goals for that. भाई जब कंसिस्टेंटली मार्च तक पोस्ट करेंगे तब ले लेंगे बिकॉज मार्च को बर्थडे. It's not that I can't take it, but I've learned this from Umgar bhai. कि भाई fix a goal, achieve it, and then gift yourself things. तो भाई that is much better. What indicator you are using? Uh, या RSI मैंने प्लॉट कर रखा था. आई डोंट नो व्हाई बट हाँ ऐसे ही करा है. ऐसे कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है उसका. आई जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट few things, not few things, just a thing that someone told me. Oh. Mm, now the main thing is just the patience game. Now it has swept the liquidity from the highs. ये almost equal highs इसने swept करा है. और कौन सा हॉली लैंड का एक एल L2 ऐसे कुछ तो है. वेट लेट मी सी.
ब्रीथ कहाँ पे है? Yeah, this one. It's better, people say. So, in fact, Omkar Bhai के पास भी यही है. I'm thinking of getting this one. Apart from it, this is another one, but इसके रिव्यूज उतने अच्छे नहीं हैं. एंड अभी फिलहाल के लिए बेस्ट तो यही है. दिस वायरलेस माइक इज द बेस्ट. ओह, M2S. Wireless phone for camera. This is new one, I believe. Yeah, इसके रिव्यूज अच्छे हैं. Price remains the same. It's cancelling this one. Anyways, I think this is the constant. मैं वही वाला लूंगा. That's fine. It's nice. Some people say it's not that nice. I'd actually stick with यही वाला M2. This is more of a bulkier setup. So yeah. तो देखो चांसेस है ना यही से ये भाग जाए, लेकिन ना मैं वो चांस लेना नहीं चाहता. तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू एंटर. यू कैन चेक डीजीआई. डीजीआई का उतना अच्छा नहीं है. आई चेक्ड इट ऑलरेडी. आई सब सर्व बिफोर यू स्वाइप बोलता है ना. आई ऑलरेडी सर्व्ड इनफ. तो अभी तो है. अनटिल अनलेस ये जब तक मैं ले रहा हूँ तब तक कोई अपग्रेड ना आ जाए, तब तक तो आई विल जस्ट स्टिक टू वॉट एवर आई थॉट. You know what? Recently, I was uh, आ गया ब्रेव का था.
यूएसडी US 100 का ट्रेड वाज आउट ऑफ सेशन टाइमिंग, सो आपने क्यों लिया था भाई? कन्विक्शन। एक्चुअली सी, लेने के लिए ये भी ले सकते थे, लेकिन ये जब तक उड़ा तब तक I was thinking of adding like position here or taking position here, I would say, uh, around this area. It would have been like close to 300 pips for now. But मैं सोचा let's wait for the session opening, and session opening is just as like it has not really opened yet. 30 minutes more to go, but still. और रही बात US 100 की, तो मेन रीज़न यहाँ पे ये था कि आई वॉज श्योर कि यूएस में बाइंग आने वाली है, एंड आई हैड दिस एक्सपीरियंस कि यूएस में मोस्टली देखो, अभी इसने है ना ऑलमोस्ट सारा मूव है ना ओपनिंग पे ही दिया, और बाकी बचा कुचा मूव रेस्ट ऑफ द दिन में दिया, लाइक थ्रू आउट द डे इट जस्ट हाउल्ड अराउंड, लाइक नथिंग मच हैज हैपेंड ओवर हियर। तो आई वाज अवेयर कि ये मोमेंट जब देगा तो वो स्टार्टिंग में देगा और फिर बाद में रोने लग जाएगा। सो दैट्स द रीजन माय प्लान वाज टू मोनेटाइज एंड एंटर पहले, बिकॉज मेरे को पता था थ्रू आउट द डे बिल्डअप हो के भी अपने अपने एरिया के नीचे तो नहीं जाएगा इफ दिस लो इज प्रोटेक्टेड। वी हैव गिवन इनफ बिग स्टॉप लॉस, और वो लो तो प्रोटेक्टेड रहेगा। आई वाज सुपर कन्विंस्ड एंड दैट्स द रीजन वी हैव एंटर्ड। सो उसमें टाइमिंग का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज द एरिया दैट वी वर गेटिंग सो आई एम ट्राइंग टू चेंज फ्यू थिंग्स कि टाइमिंग पे उतना जोर ना दे, स्पेशली यूएस मार्केट्स के लिए, बिकॉज वो डेवलप होके ये सेशन के ओपनिंग के वक्त बस घुस जाता है। नहीं, 12:30 की नहीं, अभी 1:30 डे लाइट सेविंग की वजह से इट्स 1:30 नाउ, राइट? या चेंज हो गया वापस? या इट्स 1:30 ओनली। और आपने जो पोजीशन ऐड किया था वो किया, लेकिन ऐड किया था क्योंकि 1 मिनट में तो एंट्री ही नहीं दिया मुझे। हाँ, तो इसलिए मैंने 1 मिनट, मैं दिस ईयर माय मेन फोकस एंड इंटेंशन इज टू नॉट रियली फोकस ऑन 1 मिनट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग हायर टाइम फ्रेम, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स। गोल ये है कि eventually I don't really want to be glued always to the screen, just passive monitoring, but constant one, of course. But that's the main goal. So that's the reason 1 minute, और वो if you see वो वाले में एंट्री लेट थी, मतलब ठीक ठाक सी लेट थी, मतलब मेरी एंट्री यहाँ कही थी, ये ब्रेक से पहले ही थी। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दिस। तो इतना तो चलता है यार, इट्स फाइन। 1:3 भी मिले तो भी सही है, बट इट्स मोर पीसफुल। बस लेके छोड़ दो। स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जैसे अभी यूरो वाला ट्रेड, भाई यूरो वाला ट्रेड भी अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही था, राइट? भले ही हमें बहुत टाइट एंट्री मिली, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे भी एंट्री मिल रही थी, और मैंने बताया भी था, बट वेयर वी टुक समवेयर ओवर हियर व्हेन द सेशन ओपन, व्हेन द न्यूज़ केम आउट, उसके बाद में शायद यहाँ कहीं एंट्री ली, लेट ली, बट इसके नीचे ही ली थी, यहाँ कहीं थी अपनी एंट्री। बट स्टिल दैट वाज लाइक ग्रेट। Still we managed to get 100, close to 100 pips in that one, right? 100 pips in euro, that's a great thing. So if you see, trading became more peaceful जब अपन ऐसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हर रोज बस ऐसे बस फाइट नहीं करना है कि भाई आज ट्रेड चाहिए, आज ट्रेड चाहिए। शांति से बैठे रहेंगे,
जैसे कि यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे अपना हायर टाइम फ्रेम इंटेंशन का गेम चल रहा है अभी, 15 मिनट्स में ये एरिया है, 1 मिनट में अभी देखते रहते तो लगता है यार यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि देखो चांसेस अभी भी है कि यहाँ से ही भाग जाए, बट इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर यू टू चेज। इट्स फाइन, यू मिस सम, यू गेट सम मूव्स, बट जितने भी मूव्स हमें मिले उसमें नेट हमारा 25 से 25% के आसपास रिटर्न इस मंथ का बन रहा है, राइट? एंड स्टिल देयर आर मोर 3-4 days लेफ्ट। सो कैन यू इमेजिन द पोटेंशियल? वैसे ही अगर आपने सिर्फ मेरे ट्रेड कॉपीज किए होते जो मैंने दिए और उसमें लॉसेस और प्रॉफिट सबके साथ, still I'm pretty sure you would have managed to close your month. Let's say you stop right here, still you will manage to close around 20% minimum, 20-25% के आसपास। मैं आई नो हाउ मच परसेंट यू मेड, ऑफ कोर्स रिस्क वाइज अगर आपने ज्यादा रिस्क किया होगा कम रिस्क किया होगा, दैट कैन डिफर, बट हम अगर आरआर का कैलकुलेशन करें सो इट शुड बी अराउंड 23 आरआर विथ लॉसेस और ये सारी चीजें कैलकुलेट करके। एग्जैक्टली भाई, एंड इट वाज वेरी इजी मैन, लाइक सही था। बहुत ज्यादा टाइम नहीं भाई, नाउ I want to focus more on content, business and trading itself, generating referral incomes, and selling courses. How bluntly भाई करना है मुझे यार। When people who are selling dirt cheap things for like 30, 40, 50,000, a lakh, I deserve this. I fucking deserve this. I want to build a business around it. I want to generate more revenue than we did in Moneyball. करना है भाई। And I don't think there's any bad thing about selling courses, because I do have that skill. I have that skill set of trading. I have that skill of conveying things efficiently. So why not? Why not? मनी बॉल की बंद हुआ नहीं, हमने मनी बॉल बंद किया बिकॉज हमारे गोल्स अलग थे। वी my partner wanted to get into some different business, and मुझे मेरे पास firstly उतना capital नहीं था to get into real estate, so then we decided to peacefully stop Moneyball, and we just parted our business ways. We still are in touch. We still are we still are in touch. Yeah, it's fine.
Okay. Dun, 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 dun. Trending मोड ये सब भाई देखते हैं यार बोलने में क्या ही जाता है लेकिन it takes a lot to actually stay consistent अभी फिलहाल like somehow I'm just like on the go मैं कुछ भी ऐसे randomly I want to like focus more on content and sit down in one sitting I have to make 10-12 pieces of content Redditor को देना and things like that I wanted to do that too also want to create high quality storytelling content with different angles experiment with cinematography filmmaking things that also I want to do in content itself the way I am conveying it for now it's low effort but I think low effort content works somehow like people just pick up their camera and start telling their story and it just works so yeah and those edits trendy edits insta wale ये भाई ऊपर कुछ तो लिखा होता है some sort of relatable things कि कैसे नहीं होगा या ऐसे कुछ 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 so yeah things like that also कॉलेज खत्म करने में 1.5 years है भाई जब तक कॉलेज खत्म होगा तब देखते हैं बट ट्रेडिंग तब तक तुम तो प्रॉफिटेबल और बड़े स्केल पे करोगे तो वी कैन थिंक ऑफ समथिंग डेफिनेटली तब तक मैं भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बन जाऊंगा अरे सोशल मीडिया पे ना भी बनूं ना तो भी लाइक इट्स फाइन इवन इफ आई डोंट हैव फेम बट आई वांट मनी आई वांट मोर मनी बिकॉज आई बिलीव लाइक सोशल मीडिया का ट्रेंड है भाई कोई भी चीज हार्डली 3-4 साल तक ट्रेंड में या रेलेवेंट रहती है उसके बाद लाइक एवरीवन हैज अ डाउनफॉल so I want to treat this like a business at the same time eventually you grow your personal brand and things like that will happen but yeah the main intention to make as much money as possible by providing as much value as I can देखते हैं भाई stay in touch till the time अभी तो 1.5 साल है यार 1.5 साल काफी बड़ा टाइम होता है 1.5 साल में क्या क्या नहीं हो सकता but yeah we'll stay in touch oh my face is looking dull I don't know why हाँ भाई come on bitch push down 5063 yeah around this area भाई गोल्ड में एंट्री एंटर्ड एट 5063 and sell at 5056 okay you're covering this low right hold or not बताओ थोड़ा see I wanted it to push down but that doesn't mean it will push down right because maybe it has taken out this low so I would suggest like continue to hold you have entered around a decent area continue to hold this low these equal highs will go this high will also go so continue to hold I would suggest this बिकॉज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये एक्चुअली यहाँ पे आएगा और फिर ऊपर जाएगा तो जस्ट कंटिन्यू टू होल्ड इट्स अ गुड ट्रेड
और बाकी स्टॉप लॉस ट्रेल मत करना. दिस लो इज अ प्रोटेक्टेड लो, so I don't think you like you need to worry about your stop loss. पकड़े रखो बस. See, जैसा मैंने बोला, यहाँ से it does make sense for the prices to retrace नीचे की तरफ. And most probably I would like to see, actually, see, honestly, I like to see this area, but this area can also potentially hold. So I'll be just waiting to see how it goes. In fact, like this high will also eventually go. तो भाई बायस और सब कुछ अपना बाइंग की तरफ ही है जोरदार. इंक्लिनेशन भी बाइंग की तरफ है. बस ये है अभी सेलिंग हो के अगर प्राइस यहाँ यहाँ कहीं तो आए, फिर कहीं तो आए उसके बाद हम देखेंगे. बट द इंटेंशन रिमेन्स द सेम. पहली एंट्री कहाँ थी? पहली एंट्री, ओ नाइस, प्यारी. दूसरी एंट्री यहाँ कहीं, वो भी प्यारी. Nice push down we got here. नई डस्टर looks good. Anyone checked? रेनॉल्ट की. पिछली जनरेशन से तो काफी ज्यादा अच्छी दिखती है. इनफैक्ट द इंटीरियर इज आल्सो नाइस.
हाँ भाई, ऑफ रोड फीचर्स। ऑफ कोर्स वो गाड़ी ऐसे तो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है। स्टिल नॉट बैड, लाइक आई रियली लाइक दैट। मतलब पता नहीं, अच्छी दिख रही है यार वो गाड़ी। सही है।
They actually like higher taxes so that they can drive those cars exclusively. Poor people or people with limited means should also listen to them because they should all aspire to become rich. Being rich, it is easier said than done, but easier done than imagined. I wish all the best to the youth who are trying to improve their lives. Very good, sir. The trade deal between India and Europe, very car will go down from I 100. actually love this old fellow, the way he explains things. I'm not really. I focus. Yeah, This uncle, you can check his username. This fellow is really nice. He's a doctor, Dr. Ravi Godse. And his Marathi explanations are also like chumma. so go went on. बड़ा डील हो रहा है यूरोप हिंदी में कंटेंट बनाते हैं, मराठी में कंटेंट बनाते हैं, इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं, सब एक ही पेज पे। वेरी गुड। से लेकर तीनों धर्मों को प्यार ईसाई मुसलमान और यहूदी परवा जानेवारी 10 जानेवारीचं लाईव्ह सेशन होतं ना त्याची काही लिंक माझ्याकडे अजून आली नाहीये पण ती लिंक नाही आली ना तर आपण सरळ इंस्टाग्राम लाईव्ह करू मी पूर्वी कधी केलं नाहीये त्याच्यामुळे काही चुकलं तर ते तुमच्यामुळे वेरी नाइस, हे चलो। नक्शा पुराना है देशों की सीमा है तरी Very basic video, still every video, like he clocks around, like on an average 100, 150K views. Some of his videos got million plus views too. Yeah, nice. I came across him, I believe he was he was explaining something about fat loss. That's how I came across him. और काफी सरल सिंपल भाषा में, maybe it was for uncles, but somehow I find it really nice the way he explains things. व्हिडिओ मी आताच हिंदीमध्ये पण टाकतो माझे मराठी मित्र असतील तुम्हाला वेळ झाला तर दोन्ही बघा ना 2-2 मिनिटाचे ते आणि कुठला जास्त मजेदार वाटतो तो सांगा त्या गोळ्या आठवतात का बडीशोपेच्या गोळ्या त्यांना आम्ही चण्या-मण्या म्हणायचो माझा मुलगा 3 वर्षाचा होता त्याला भयंकर आवडायचं मी 5 ये वीडियो मैंने मराठी में भी बनाया भाई कंसिस्टेंसी अंकल के पास है, भाई अंकल के पास कंसिस्टेंसी है। The news broke that Harvard क्रेजी। एमपीवी वायरस बद्दल ना 2 मेडिसिन के 2 पास 23 तारखेपर्यंत is the trade deal between हम्म। भाई 13 people are watching us like the stream। Gold looks like it can potentially come to our area, but the main thing is patience। पेशेंस रखो, पेशेंस, पेशेंस से ही होगा। यार यही पहले अभी अपन देखते हैं, अपन बोलते हैं अरे यार यू नो व्हाट, 1 minute structure has shifted, 5 minute structure has shifted, let's try to capture short and then capture longs। Like why, just take the more like higher confirmed entry। In fact like this retracement is also like 120, 130 पे वैसे नहीं बनते, but क्यों, like let's protect our peace, है ना। हमें वो नहीं बनना कि भाई शॉर्ट भी ले रहे, लॉन्ग भी ले रहे, सब कुछ ले रहे, भाई नहीं। शांति चाहिए भाई, बूढ़े होते जा रहे हैं, शांति चाहिए। तो इंस्टेड
I actually mean it, like protecting my peace over making more money, taking random trades here and there, chasing markets and chasing candles here and there. That is not sustainable at all. I have been there. I have done those things. I have traded 15 seconds. I literally have captured these moves. I have literally captured this, literally captured this. Like everything I've done by doing all of those things with experience, I'm telling it's not really worth it. Because end of the day, you are doing everything for पैसा और पैसा अगर आसान चीजों से बन रहा है तो क्यों फाइट करना है ना. So any day I would love to protect my mental peace and not really, forcing trades यहाँ वहाँ. अभी देखो, I am seeing this as a room of inefficiency. I think if it reach here, there's a chance कि another dip दे दे, या तो मैं चाहूंगा कि यहीं से वो नीचे भाग जाए. Probably अगर यहाँ मतलब यहीं से मैं वेट करूंगा, लेकिन यहीं से आए तो, वरना यहाँ पे मोस्टली मैं लिमिट के बारे में सोचूंगा. स्ट्रीट गाने को 400 पे. Let's wait. That is the only thing we have had. Oh God. दोस्तों बहुत मैं पूरा आपके सामने सकता हूँ अंदर डिटेल्स जानने के लिए थोड़ा सा भी लगे और इसके अंदर रहने खाने के लिए सारी चीज़ों की सुविधाएं अवेलेबल है. मैं थोड़ा सा देख पा रहा हूँ किचन है ऊपर बेड बना हुआ है. ये जो सेटअप है बोले तो आप सर देख इसको भूख लग रही है छोटू को है ना छोटू भूख लग रही है ना. दोस्तों अभी इट्स अ ब्यूटीफुल प्लीजेंट मॉर्निंग. बहुत ही ठंडक है बहुत ही अब ज्यादा अमेजिंग सा एटमॉस्फेयर यहाँ पे. वहाँ सामने सूरज दिखता है तो बहुत सारा जरूरत है.
Oh, I hope my now I'm audible. Uh, I was saying that it has swept liquidity यहाँ से नीचे. तो देखो मैं चाहूँगा ये हो कि प्राइजेस यहाँ से ऊपर जाए फिर नीचे चले जाए फिर मैं लॉन्ग्स लूँ. बट अगर ये ना करे वैसा जैसा मैं चाहूँ
तो भाई उसकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर नहीं मिलेगी एंट्री हमें, और हम निकल जाएंगे मार्केट से बिना कुछ लिए। बट जस्ट विद इन दिस रेंज आई वुड बी मोर एक्साइटेड टू एंटर। ये जो एसएल रखा है ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, मतलब अगर अपन ये वाली एंट्री लेंगे तो हाँ, बड़ा नहीं है यार, मतलब शायद आपके अकाउंट के लिए थोड़ा बड़ा हो सकता है। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज वेट फॉर, एज सुन एज इट टैप, वेट फॉर अ सॉलिड रिजेक्शन, या तो वेट फॉर सम लिक्विडेशन, सम पहले बिल्ट अप फिर स्वीप, एंड देन व्हेन स्वीप हैपन, जैसे ही स्वीप होता है तुम एंट्री ले सकते हो छोटा स्टॉप लॉस रख के, या तो वेट करके जैसे ऑर्डर फ्लो बन जाए तब ले लेना एंट्री। दीज आर द टू वेज हाउ यू कैन कैपिटलाइज ऑन दिस वन। तो वेट करेंगे यार, यही अपने हाथ में, और तो कुछ नहीं है। Come to 55035. I don't see any solid reason for it to reach there. The ranges are tested. So if it comes, then you can act accordingly. But at the moment, this area is more logical. Don't expect कि भाई उतना नीचे आए, because ये जब होल्ड कर रहा है अच्छे से, इसने लिक्विडेशन के लिए पहले यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ट अप करी है। लाइक यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, लाइक यहाँ पे लॉस इन मोमेंटम है। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस डिप इज मोर देन इनफ फॉर इट टू अगेन रीगेन इट्स एनर्जी एंड कंटिन्यू टू पुश अप। तो इतना नीचे पता नहीं है, आए तो देखेंगे, बट आई एम नॉट रियली प्लानिंग फॉर दैट। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक आए। So this guy has done the full reimagination in 5 months. Korumangala First Hospital. And hospital, a friend of mine. But he said like, hospital to reimagine करना है. So this guy has done the full reimagination in 5 months. Korumangala First Hospital. The entire hospital is run on AI. The most emotional, sensitive industry, high stakes, is run on goddamn AI. Whatever you want, family of 4, 3,000 rupees. There are no counters, no forms to fill, no demands. क्या हो रहा है, record it, do that. Then second stage, Slack, then channel open हो गया. Slack, the entire hospital is running on Slack. And the doctor is saying everything. Transcribing. Now say, 5 agents are fired. क्या चाहिए? Prescription क्या है? Pharma को गया, pharma delivered district there. People are fighting is, did you see me properly? Why are you sending me so soon? What's over here? No, there's somebody doing that in Bangalore. Nobody in the world does that. Friend of mine. He said like, if you're like so obsessed, he's
तो भाइयों, जैसे हमने कहा था कि यहाँ आएगा इसने इनएफिशिएंसी तो ठीक ठाक सी फिल कर रखी है। ओके, अभी डिपेंड करता है स्मॉलर टाइम फ्रेम किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बेसिस पे अपन करेंगे लॉन्ग या शॉर्ट। शॉर्ट नहीं, सॉरी, शॉर्ट तो यहाँ कर सकते थे ना, तो भी नहीं किया। हमें पता था, हमें पता नहीं था, मतलब हमारा एंटिसिपेशन था ये नीचे आएगा, जो कि आया है, तो पैसे यहाँ पे ही बन सकते थे, लेकिन हम नहीं कमाए, क्योंकि हमारा गोल और इंटेंशन ये था दैट वी विल वेट फॉर it to retrace to something within this and then we will enter. So still there is more room for another 170-80 pips. Let's see.
अरे क्या हुआ, क्या खराब हुआ डर? हमारे साथ हुआ क्या कि हम लोग काफी जल्दी जल्दी स्किप कर रहे थे। डार्क स्टोर मॉडल में चले गए थे। We were spending a lot of money setting up the dark store, scaling really really fast. And उस समय हमारा जब चला कि हम और पैसा रेस करते रहे, राइट? हमने 200 मिलियन रेस किया, हमने सोचा कि अभी 6 महीने में और कर लेंगे रेस। हाँ, हम उस रेट पे स्पेंड करेंगे, जल्दी जल्दी स्किल करते हैं चीजें। बट एट द सेम टाइम हम लोग काफी, हमारे में बहुत सारे बिजनेस था, मार्केट प्लेस था, फूड था, बहुत सारी चीजें। और डार्क स्टोर ₹25 करोड़ का मेरा ये प्रॉफिट जो okay. Uh, I'm just still waiting. Silver. Oh, now see, this is a decent area for me to. Oh,
This is good enough push for us to actually like sold. मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ just for more conviction to build in. See, it's not that uh, ये लो होल्ड करे या ना करे. आई एम नॉट रियली श्योर येट, तो इसलिए लेट्स वेट बिकॉज आई स्टिल सी अ चांस कि यहाँ से ये थोड़ा ऊपर जाके वापस दम दे सकता है. सो दिस एरिया लुक्स गुड एंड प्रॉमिसिंग. यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी बची है दैट इज आल्सो नाइस. सो आई विल बी बेटिंग ऑन दिस वन. रेस्ट अगर ये यहाँ से ही भागे विथ higher time frame conviction, eventually I will also be aligned and start positioning myself that way, where I am just looking for longs. It's, if you are a trader, Last reel didn't perform well. random basis, Yeah. not
I'm adding like my first position. I'm just taking small entry, okay? I'm keeping this as my stop loss. It is not advisable for everyone to enter with that because the thing is मेन एंट्री यहीं पे होगी बट यहाँ पे रिस्क काफी बड़ा है सो इट्स अप टू यू बट मेन एंट्री हम यहीं से करेंगे. हेलो. हेलो. हाँ.
मेरी एक एंट्री ऑलमोस्ट यही कहीं पे हुई है around this area. If it push down lower, I'll be adding more to यहाँ से. हम सेशन में दे अंदर. German index has dropped his swept liquidity. थोड़ा सा और नीचे आने का मेरा एक्सपेक्टेशन है. नीचे आए तो लॉन्ग ले लेंगे, ठीक है. ये डिमांड पे अगर टेस्ट करता है प्राइजेस तो लॉन्ग ले लेंगे. आई डोंट नो इफ इट विल. हो गया, अलर्ट लग गया. If it reach here, we'll go with decent sizing. Of course, after confirmation, not ऐसे ही उठ-सुट.
randomly. नहीं. German index is looking like it's trying to hold. नीचे आएगा तो और मजे. From here, take a decent sizing. I'm already in, by the way, okay? Like a very small position I have taken here. But once it drop, I'll add more. दोस्ती करना इसलिए भी छोड़ दिया है कि जिस स्टेज पे अब मैं हूँ ना, मुझे अब कोई नहीं मिल सकता, ना ही मुझे कोई समझ सकता। इसलिए मैं अब दोस्ती करता हूँ, वही एक्चुअली सब
Couple Q. The reaction is good भाई लेकिन क्या ये hold करेगा is the question. It's holding around my entry only. अगर इसने ये इनएफिशिएंसी फिल कर दी ना फिर तो रॉकेट हो सकता है ये यहाँ से ये रॉकेट यहाँ से भी हो सकता है बस ये थोड़ा डिस्काउंटेड एरिया होगा तो और अच्छा होगा और मजे आएंगे
टिन लग रहा है भाई यहाँ से ये होल्ड कर रहा है, बट अब तक कुछ बोल नहीं सकते। लेट्स जस्ट सी। जर्मन इंडेक्स अपने रेंज में आया है। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा आई विल बी थिंकिंग ऑफ एंटरिंग देयर। दिस इज मेसी नाउ। लेट्स जस्ट सी हाउ इट बिल्ड्स मोर। लेकिन मैं चाहूंगा एक 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 डिप आए फिर ऊपर भागे। ये मेरी एक पोजीशन है ऑलरेडी, बट नीचे आए तो इट वुड बी फन।
So I don't think GRE 40 German index उसने liquidity hunt करी है. I'll be waiting for उसमें भी order flow का, not really directly jumping अभी. It has perfectly tested the area, but let's see. यूरो भी वो जो डिमांड हमने मार्क करा था वहां से होल्ड कर रहा है काफी अच्छा. गोल्ड रो रहा है तो गोल्ड इवेंचुअली मेरे को लग रहा है कि धीरे 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 ये रो रो के ऊपर जाएगा, बिकॉज इट हैज लाइक बाउंस्ड ऑफ फ्रॉम दिस एरिया. बट स्टिल द कन्विक्शन इज नॉट ऐसे बहुत ज़्यादा सॉलिड कि अब यहाँ से तो पक्का जाना ही है अब ऊपर बाबा. ये वाला कन्विक्शन अभी भी नहीं है. ये सेटअप लेने का सेंस नहीं बनता. दूसरा, यूरो में अभी फ़िलहाल कोई ट्रेड आइडिया अभी मेरे पास नहीं है. डायरेक्टली फ्रॉम हियर मे बी, बट वो मेरे प्लान में नहीं था, सो आई जस्ट मिस दिस. फोकस गोल्ड पे है, लेकिन गोल्ड गोल्ड हैज़ retraced enough, like it has swept liquidity and it is bouncing off from my area, but the price action is not that convincing कि यहाँ से ऊपर जाए. लाइक जा सकता है, it has swept liquidity, लेकिन ये अभी कंसोलिडेशन में. सो आई वांटेड टू सी समथिंग रियली नाइस. और यहाँ पे एंट्री लेके इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना मेक ज़ीरो सेंस. सो इसलिए हम वेट करेंगे. अगर यहाँ पे आएगा तो आफ्टर अ स्मॉलर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन विल एंटर एंड आई विल कीप यू अपडेटेड फॉर द सेम. जर्मन इंडेक्स के लिए मैं जैसे मैंने बोला, आई विल वेट. इट हैज़ retraced nicely, but let's wait for some more confirmation. जैसे कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के रेंज में आके, I mean like higher time frame के range में आके some more confirmation, and that would be good enough for us to enter in longs. If I just check the risk of everything German index के लिए short. लगते हैं यहाँ पर stop loss लगता है. Damn. So actually, see, we can think of entering longs. Fresh. I've entered longs German index right here. I'm keeping the stop loss can actually look a bit off, but I'm just trying to cover something within this. And the thing that I'm targeting is actually up here. 1:4 is what we can actually think of. Eventually, it has more room to move, but this is the minimum that I'm targeting right now. If we just go to 1 hour, extend this, ये पूरा इनएफिशिएंसी और ऑल टाइम हाई अपन टारगेट आइडियली कर सकते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से कैन लेट्स सी.
So yeah, I have entered in this. So एंट्री बना लिए होगी अब तक आपने. I'm just trying to cover this low as a stop. Actually, not this low, something within this. And this looks good to me. Here I'm risking not something crazy but okay-ish. Because the more conviction was on gold. I am waiting for it to push down, but it don't look like it's gonna push down. It's gonna just build up and move up higher. That is what we can mostly see. All right, folks. I will TP on. I TP on German index would be ideally all-time high, but you can also target this in efficiency. Like after it takes out this high, you can take out your first positions of this. On us to 3.5 is what you will easily get in this one. So yeah, you can target that. This is a good trade. Continue to hold. Overall, the all-time high is supposed to be taken out. So manage your positions accordingly and continue to hold your positions because this is a decent trade. This is what we have planned and we got within that area. So this is the logical one and a decent one too. The reaction is good. Let's see how it reacts from supply and then continue to hold this. ऑलराइट. गोल्ड में भाई, गोल्ड में बायस लॉन्ग्स ही है और इसने प्यारा सा मूव दिया है जैसे हमने चाहा वैसे कर रहा है, बट उतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना टेक्निकली सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा ये एंट्री नहीं बना है. ठीक है. सो या दैट वाज अबाउट इट फ्रॉम माय एंड फॉर लंदन सेशन. आई विल सी यू इन न्यूयॉर्क. ठीक है. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड. सी यू. बाय 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 बाय. होल्ड योर trades